Chief guest of today's function, Honorable Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Srimati Nirmala Sitharaman ji Madam, Honorable Minister of State for Finance, Sri Pankaj ji Chaudhary, Revenue Secretary Sri Tarun ji Bajaj, Chairman CBIC Sri Vivek Johri ji, Member of Investigations CBIC Sri Balesh Kumar ji, all the members of CBIC, all different executives from the department, and all dignitaries for the function. It gives me immense pleasure to attend this function, and I congratulate the awardees from the President for different good function or good tax collection and all functions in this department. Before congratulating all the executives, I congratulate Honorable Finance Minister Madam, because since last 2 years of pandemic, she came with the different schemes from street vendors to MSMEs, from laborers to farmers, for different women. And because of the different schemes she has announced in the last 2 years, our economy is now growing, and we were able, our Indians, or we were able to give the stable economy in these years. I congratulate also the officers to whom we are going to felicitate today, because of their hard work, sincere work, we are able to achieve the different goals in the tax collection, that is GST and income tax. As we see the figures, the figure of the GST collection in January was around 1.40 lakh crores. In the February also it's around 1.30 lakh crores. The figures are increasing. That shows our economy is growing. In the last 15 days, the IMF shows our growth is around 9%, and it is as compared to world's 4.4%. So the economy of the India is doing well as compared to the rest of the world. Coming to our officers who are working day and night for collecting the tax, particularly we are going to celebrate 5 women's. We understand the women are having a double responsibility. As a family, they have to take care of the children also, family also, and they have worked very hard to achieve the goal and they have accepted the challenge. The tax collection challenge is, I think, it is a difficult challenge, but our officers, they have got the challenges and they have done very well. At the same time, we doing the duty, the families also, they have supported well to all the officers. So I congratulate all the officers with their all family members. This tax collection in this department is very important to develop the nations. In the budgets you have seen, the different schemes we have declared. In the Madam, on the 1st February, she has come with a very good budget. This budget is declared on that day by keeping in mind on 25 years ahead. It's Amrit Kal Mahotsav budget. So I say this is possible only and only because of the revenue generation. So this department and all the officers starting from the class 3, class 4 level to the top officers are very important in the department. So I congratulate everybody, and particularly the awardees to whom we are giving the awards by the hands of Honorable Madam. Thanks for inviting me. Thank you.
धन्यवाद महोदय। माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी 3 दशकों से भी अधिक समय से जन सेवा के क्षेत्र में समर्पित रहे हैं। विधि निर्माण के क्षेत्र में एक सांसद के रूप में माननीय वित्त राज्य मंत्री जी का यह 6ठा कार्यकाल है। अलंकरण समारोह के इस अवसर पर आपका हमारे बीच उपस्थित होना वास्तव में हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। मैं माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी से अनुरोध करूंगी कि वे सभा को संबोधित करें। अलंकरण समारोह की मुख्य अतिथि भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री परम आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, मंच पे हमारे मित्र MOS फाइनेंस भगवत कारट जी, रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज जी, CBIC के चेयरमैन विवेक जौहरी जी, मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन बालेश कुमार जी, यहाँ पर उपस्थित सभी कर्नाटका से आए हुए हमारे अधिकारीगण, साथियों, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि इस खुशी के मौके पे आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। निश्चित तौर से आज का दिन आपके जीवन का महत्वपूर्ण क्षण है और ये क्षण बहुत मेहनत और तपस्या के साथ आता है। मैं 2020, 2021, 2022 का पुरस्कार का सूची देख रहा था। बहुत ही ट्रांसपेरेंसी तरीके से निर्णय लिया जाता है। टॉप से लेके बॉटम तक इसमें अलंकृत हो रहे हैं। कुछ लोग काम करते हैं जो दिखता है, लेकिन बहुत से लोग साइलेंटली वर्क करते हैं और इस सूची में मैंने देखा है कि उन सब का नाम समाहित किया गया है। जीवन का अपना अपना लक्ष्य होता है। आम आदमी सबसे पहला लक्ष्य होता है सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी में कुछ लोग 10 से 6 अपना काम करते हैं, कुछ लोग निष्ठा और मेहनत से काम करते हैं। जो निष्ठा और मेहनत से काम करते हैं आज वो अलंकृत हो रहे हैं और साथ ही साथ उनको बहुत कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, हम लोग के साथ भी बहुत से लोग अधिकारी के लोग रहते हैं कि अपने परिवार के किसी भी कार्य में सहभागिता नहीं ले पाते। बच्चे के पेरेंट्स मीटिंग में जाना होता है तो भी नहीं जा पाते हैं। बच्चे का अच्छा मन रहता कि पिताजी हमारे मीटिंग में आवें। घर में कोई फंक्शन होता है वो भी छोड़ना पड़ता है। त्यौहार तक का भी त्याग करना पड़ता है मित्रों। इसलिए बिना परिवार के सपोर्ट के यहाँ तक पहुँच पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। मैं उन परिवार के लोगों को भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ कि आपके सहयोग के नाते ही आज यहाँ तक आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और कहीं ना कहीं जो आज अलंकृत हो रहे हैं वो डिपार्टमेंट के लिए एक लाइट हाउस की तरह होंगे, प्रकाश स्तंभ, कि जिस प्रकार से समुद्र में जब दिशा भटक जाते हैं लोग तो लाइट हाउस के सहारे किनारे आते हैं। आज आपका ये अलंकरण जो हो रहा है उसको देख करके कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के बहुत से लोग उस तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे मित्रों, क्योंकि मानव का जीवन का उद्देश्य क्या है? मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ होता है मित्रों। हमारे समाज में, सृष्टि में जानवर भी हैं, बहुत से लोग हैं, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण मानव जीवन होता है मित्रों। कुछ का लक्ष्य होता है कि हम बहुत पैसा कमाएं, अरबपति खरबपति बनते हैं, लेकिन अंत में उनका होता है मानव सेवा। और आपने देखा होगा, चाहे वो बिल गेट्स हों चाहे जिम प्रेम जी हों, जब एक सीमा तक पहुंच जाते हैं तो दान पुण्य के माध्यम से कहीं ना कहीं मानव सेवा करने का ही काम करते हैं।
वो दान द्वारा सेवा करते हैं और आप अपने कर्तव्यों द्वारा सेवा देश का करते हैं, क्योंकि जो भी आप एक भी फाइल चलाते हैं उससे जो ऑर्डर्स निकलता है भले वो सरकार के लिए होता है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं मानव सेवा में उसका उपयोग करती है, तो आपका भी मानव सेवा कहीं ना कहीं होता है। विभाग का योगदान फेसलेस, पेपरलेस, कॉन्टेक्टलेस जब से हुआ है, कहीं ना कहीं जो कस्टमर्स को हमारे घूमना पड़ता था, जगह जगह दौड़ना पड़ता था, आज इससे कहीं ना कहीं बहुत आसानी हुई है। अभी बजाज साहब भी कह रहे थे कि कोविड काल में हमारे डिपार्टमेंट के लोग, जब पूरा देश अपने घर में बैठा था, निकलने से लोग डरते थे, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के लोग कहीं ना कहीं फ्रंट लाइन वर्कर की तरह अपने दायित्वों का निर्वहन किया, और जो विदेशों से हमारी दवाइयाँ आ रही थी, चिकित्सा उपकरण आ रहे थे, वो जल्द से जल्द देश में पहुँचे, उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। तो जीएसटी संग्रह कोविड काल के बाद मुझे प्रसन्नता है कि इधर 5 महीने से 1,30,000 करोड़ का रिकॉर्ड छू रही है, उसके लिए मैं भी आप सबको बधाई देता हूँ। राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में चला था, आपने अनुकरणीय काम किया है। 5,08,000 फाइलों का समीक्षा किया, जिसमें 3,08,000 फाइलों का आपने वीड आउट किया। वेस्टेज स्क्रैप्स निकाल करके 37,000 वर्ग फुट ऑफिस में स्पेस बनाया। मैं इन सब चीज़ों के लिए जो अंकित हुए उनके परिवार के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देते हुए और एक विश्वास दिलाता हूं आपको कि आप जैसे अधिकारी, चाहे व्यक्तिगत कार्य हो चाहे डिपार्टमेंटल कार्य हो, हमारा ऑफिस और मैं स्वयं तत्पर रहूंगा आपकी मदद करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. As public servants, the primary goal of the civil service is to execute and uphold the vision of our democratically elected leaders. In the Union Budget for the year 2022-23, the Honorable Finance Minister, Srimati Nirmala Sitharaman ji, has articulated a growth-oriented and pro-development vision with a strong focus on augmenting infrastructure availability. The Honorable Finance Minister has also emphasized the importance of sustained economic growth as well as a predictable tax regimen. As officers entrusted with the task of indirect taxation and customs, we are indeed grateful for the opportunity to do our part in bringing this vision to fruition. Madam, we are deeply privileged and gratified to have you with us here today. I request you to kindly address the gathering. Namaskar, my colleagues in the Council of Ministers, Shri Pankaj Chaudhary, Shri Dr. Bhagwat Kharad, Revenue Secretary Tarun Bajaj, Chairman of the CBIC, Vivek Johri, Member Investigation Baleshwar, members of the board, former members, and today's awardees and their families, the media. I'm extremely happy to be here. The second time when I participated in an investiture. The first time I did was slightly when we had a relief from COVID, when we had the meeting in Lucknow. That was the first time I participated in an investiture, and I relished every moment of it because there was so much what I can call as emotion, the investment that the families have done, the career, and almost at the risks of their own lives, some of the performances of some of the officers, all made me feel it is something worth experiencing for oneself, not just as somebody who's going to give the awards or anything, but to be in the sidelines somewhere and look at what happens. For a moment, I'd like to go back to 2019, when I wasn't aware of the investiture at all.
when throughout the country, on the direction of the Prime Minister and with the entire Finance Ministry's team, I would go to different centers to talk to people about why, in spite of all the great work that both the boards do, the perception about a few wrongdoings, a few malafide, had dominated the scene, that if they spoke of income tax or customs, the first few things would be, can there be less harassment? Can there be less, compliance requirement? Can it be a bit more professional? And I used to wonder, what is wrong? I mean, what's going on? Why is it that, the entire service would be painted in a slight color, where, like in every other service, you could have one or two wrongdoings happening. So 2019, large part of it went around the country, and I probably was only looking at people who said, we're doing our jobs, it's fine. But that was clearly required at that time. But passing through the COVID, I must congratulate the CBIC. You saw an opportunity to prove your mettle. You saw an opportunity to tell the people of India, we are here to serve you, and even at a difficult time like the COVID, during the lockdown. And I did mention this even during my Lucknow address, and I probably will recall this every time there is a context. Customs stood out for that exemplary service that you did for the people of India during the lockdown. And I'm so proud that you could beat all that impression which was going around based on a few wrongdoings here and there, to prove that you're people who carry on with your profession very seriously, with commitment, with passion. And no COVID lockdown could keep you giving any excuses. And matter of fact, globally, people saw a service which could rise to the occasion. When people were dreading to come out of their homes, you were there with all the PPE kit and everything at the port, receiving and dispersing and also clearing those which had to go to the hinterland. So I appreciate you for that. And I also will say, after that, when I heard the little stories of the ways in which several of the missions or tasks that you performed, it makes me feel that the sovereign power to tax and the power of taxation will be ineffective unless there is passion in the way in which you do your duty. It is that passion which makes you collect. Otherwise, what is there? It is a routine job. You can always do it. But no, in the pursuit of wanting to perform and perform to a level of excellence, you have shown the way. And I today take this opportunity to praise the entire service, because I'm seeing during many of the times I don't even probably respond, but the pictures you put out, the immediate news that you give of how you've contained smuggling, of how much you've captured at the ports from smugglers, and also some of the rare occasions when you have to chase them into the towns and villages, risking your own lives, have all been exemplary. And I would have only had the time, I would have tweeted day in and day out as and when I see your messages of how vigilant you've remained at the borders. This is something which is performed with passion for the sake of this nation and the nation's economic security. I appreciate all the efforts, and this evening, the President's Award which is being given, and I'm glad my colleague Pankaj Chaudhary nicely recalled, when our children go to school and they receive their awards, they expect the parents to be around. The child eyes become dull when they don't see their parents watching them and clapping for them. Now, as adults, I'm sure you don't need to say, but your family has all come here. I see some children also being here to see their mother or father receive the award.
or grandparents receive the award. It is this culture which I like to appreciate in the CBIC, because that is how you instill a certain value in the family members for the next generations, saying, I've seen my grandparent receive an award, my father receive an award, or my mother receive an award. So that child actually looks at exemplars. And it is that which I think, which is very important for this country, because every generation should have somebody in its immediate vicinity to have as exemplars and aspire to reach that level. I'm very happy, and you're very fortunate to have members of your family to be here today to see you receive the award. I won't take too much time because your moment is now. And one other word of praise for CBIC. I was just looking into that nice picture book they have created with the names listed out and the story of the achievement which has brought you to receive it. That itself is worth keeping for keepsake, because it tells the story of how you were chosen for the President's Award. And the company you keep, irrespective of the rank of the person who receives the award, each one of you have done so good, so well for the nation, selfless. And you're in the company of great guys who are receiving the award today. So that document as well has been very thoughtfully and very well produced, so you could possess it for generations for your people to see it. I'm very glad to be here. I feel very humbled standing before you for the work that you've done, for the year-long, decades-long service that you've given, and today receiving the award. It's all right, it's Rashtrapati who's giving it. I'm only handing it over, nothing to do with me, but brilliant, great work all of you all have done. I feel very humbled. Thank you very much for having me here. Jai Hind. Thank you very much, Madam, for your inspiring words. As our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji has emphasized, serving the citizens of the country is the highest duty of a civil servant. Today, in this solemn ceremony, we honor some of our best and brightest, those officers who have strived to live up to this ideal with untiring, devoted, and steadfast efforts in various domains, holding themselves to the highest standards and discharging their duties with devotion and dedication. I now request our Chief Guest, the Honorable Finance Minister, to award the Presidential Certificates of Appreciation and medals for exceptionally meritorious service at risk to life and for the specially distinguished record of service. I request all dignitaries on the dais to please join the Honorable Finance Minister on stage. अब हम वर्ष 2021 के लिए जान के जोखिम पर की गई औपचारिक विशेष सेवा के लिए राष्ट्रपति प्रशंसा प्रमाण पत्र एवं पदक विजेताओं के क्रम में पुरस्कार समारोह का आरंभ करते हैं। श्री विपिन पाल आसूचना अधिकारी के रूप में DRI जोधपुर में कार्यरत हैं। काम के दौरान एक दिन श्री पाल को सोने की तस्करी की सूचना मिली। सूचना मिलते ही इन्होंने एक टीम इकट्ठी की और तस्करों को पकड़ने निकल पड़े। संदिग्ध वाहन को आते देखकर जैसे ही DRI की टीम ने उन्हें रोकना चाहा, तस्करों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। तब श्री पाल ने अपार साहस और कौशल का परिचय देते हुए उस संदिग्ध वाहन पर काबू पा लिया तथा तस्करी के इस प्रयास को विफल कर दिया। अभियान में 5.5 किलोग्राम सोना एवं 220 किलोग्राम चांदी बरामद की गई। Albert George. Following a tip-off on gold smuggling, a DRI team positioned itself to intercept the suspect vehicle.
As the team attempted to flag down the vehicle, it rammed into the motorcycle on which Sri Albert George, intelligence officer from the Cochin Zonal Unit, was riding. He was knocked off the motorcycle and suffered injuries in the course of this interception, but remained focused on his determination to apprehend the persons involved. His actions led to a recovery of gold weighing about 3.4 kilograms from the vehicle. अब हम वर्ष 2021 की सेवा के विशेष रूप से प्रतिष्ठित रिकॉर्ड के लिए राष्ट्रपति प्रशंसा प्रमाण पत्र एवं पदक विजेताओं की ओर बढ़ेंगे। सूची में पहला नाम श्री एस तिरुनाउकरसु का है। श्री तिरुनाउकरसु DRI चेन्नई में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। GST इम्प्लीमेंटेशन के लिए गठित राष्ट्रीय IT समिति के संयोजन से लेकर CBIC GST बैकएंड एप्लीकेशंस के विकास तक श्री तिरुनाउकरसु का योगदान अतुलनीय रहा है। Shri Amitesh Bharat Singh. Shri Amitesh Bharat Singh, ADG DRI Bengaluru, is an exceptional officer who has excelled in intelligence and investigation, rendered crucial inputs to GST policy formulation, mentored young officers, and provided invaluable service as First Secretary Commerce at the Indian High Commission in Singapore. श्री वेणुगोपालन नायर। श्री वेणुगोपालन नायर नासिन चेन्नई में सहायक निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। महोदय एक उच्च कोटि के प्रशिक्षक हैं एवं अधिकारियों की कार्यक्षमता निर्माण के क्षेत्र में अत्यंत सक्रिय रहे हैं। Shri Dibyendu Das. Shri Dibyendu Das, Assistant Commissioner, PCCO, Kolkata, was instrumental in ensuring the timely issuance of promotion orders to about 1,500 officers, improving employee morale, and thus providing an impetus for better public services. श्री विजय सिंह प्रताप सिंह बिहोला। श्री बिहोला गांधी धाम में सहायक निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। आपके उत्कृष्ट मानव आसूचना नेटवर्क द्वारा दी गई सटीक जानकारी के माध्यम से विभाग द्वारा बड़ी मात्रा में नशीली दवाओं की जब्ती की गई। Shri Himanshu Shekhar Shah. Shri Himanshu Shekhar Shah, Senior Intelligence Officer, DGGI Bhubaneswar, has been instrumental in several high-value detections and recoveries and the arrest of 8 fraudsters who were involved in defrauding the exchequer by creating fake firms.
राजीव रंजन कुमार। श्री राजीव रंजन कुमार डीजीजीआई मुख्यालय नई दिल्ली में वरिष्ठ आसूचना अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। सीमा शुल्क में अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने 136 किलोग्राम गांजे की जब्ती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। Shri Mohanan Malod Valappil, presently retired from service, has been an exemplary investigator whose efforts have resulted in the detection of tax evasion of over 2,000 crores with a recovery of over 600 crores. श्री शुभकांत प्रधान। श्री शुभकांत प्रधान भुवनेश्वर आयुक्तालय में अधीक्षक के रूप में कार्यरत हैं। तस्करी विरोधी एवं एनडीपीएस अभियानों के दौरान श्री प्रधान का प्रदर्शन अतुलनीय रहा है। Shri Suhrud Avinash Rabde. Shri Suhrud Avinash Rabde, Assistant Director, DRI Mumbai, is an exceptional investigator whose expertise in cutting-edge technology has been invaluable in the detection of large-scale duty evasion to the tune of over 1,000 crores. श्री रमाकांत यशवंत मोरे। श्री रमाकांत यशवंत मोरे विमानपत्तन विशेष माल आयुक्तालय मुंबई में अधीक्षक के रूप में कार्यरत हैं। श्री मोरे ने एनसीबी के अधिकारियों के साथ मिलकर भारत में कोकीन की एक बड़ी खेप लगभग 200 किलोग्राम कोकीन की जब्ती को संभव कर दिखाया। Shri P. Kannabiran. Shri P. Kannabiran, Senior Intelligence Officer, DRI Coimbatore, has led exceptional anti-smuggling operations to intercept speeding suspect vehicles and boats in the difficult terrain of coastal Tamil Nadu, resulting in the seizure of over 340 kilograms of gold and other contraband. लक्ष्मीकांतन। श्री ए लक्ष्मीकांतन डीआरआई चेन्नई में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। महोदय द्वारा किए गए विश्लेषणों के माध्यम से त्रिची, कोयम्बटूर एवं मदुरई हवाई अड्डों पर सोने की तस्करी से संबंधित कई मामलों का पता लगाया गया। Shri S. Vijay Kumar, Senior Intelligence Officer, DRI Chennai, has played an exemplary role in the seizures of gold, narcotics, red sanders, and other contraband with a total seizure value of over 600 crores.
श्री अर्घ भट्टाचार्य डीआरआई कोलकाता में वरिष्ठ आसूचना अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। शुल्क चोरी करने तथा छूट का अनुचित लाभ उठाने वाले मामलों पर लक्ष्य साधने की इनकी क्षमता अनुकरणीय है। Shri M.K. Madhivanan, Assistant Commissioner, PCCO Chennai, has conducted over 100 GST outreach sessions, played a major role in the publication of the GST Hindi and Tamil lexicons, and created educational videos in 5 languages on aspects of taxation. श्री महेश कुमार जीएसटी बेंगलुरु दक्षिण आयुक्तालय में अधीक्षक के रूप में कार्यरत हैं। पिछले 10 वर्षों में इन्होंने 150 से अधिक केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और जीएसटी से जुड़े मामलों का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। Srimati Anita Jadhav, Superint, Special Economic Zone Pune, played a crucial role in building a comprehensive MIS system in CBIC at an all-India scale and has rendered commendable service in investigation, data analysis, anti-evasion and narcotics detection. श्री अजित सुरेश लिमये सीजीएसटी पुणे द्वितीय आयुक्तालय में अधीक्षक के रूप में कार्यरत हैं। मामलों के कानूनी और तथ्यात्मक पहलुओं के विश्लेषण एवं मानव आसूचना के क्षेत्र में श्री लिमये की कार्यक्षमता अतुलनीय है। Shri Prasanna V.S. Joyce, Senior Technical Assistant, Telecom Customs Bengaluru, has been outstanding in providing technical support, managing EDI, revamping faulty equipment, reducing e-waste, and performing data analysis for the last 3 decades. श्री मदन दास डीआरआई कोलकाता में ड्राइवर प्रथम श्रेणी के रूप में कार्यरत हैं। श्री दास ने अपने अच्छे ड्राइविंग कौशल और वाहन पर कुशल नियंत्रण के माध्यम से डीआरआई की टीम को समयबद्ध तरीके से वांछित स्थानों पर पहुंचाया।
Rajpal Singh. Shri Rajpal Singh is presently retired. During his 23 years of service, he discharged his duties with utmost devotion, especially during the COVID pandemic. Unfortunately, Shri Rajpal Singh could not be present here today due to ill health. We now honor the recipients of the President's Award for the Specially Distinguished Record of Service for the year 2022. Shri Rajesh Pandey. Shri Rajesh Pandey, Principal ADG, DRI Mumbai, has excelled in intelligence and investigation, played a crucial role in passing on actionable intelligence to foreign agencies, and was also a key team member for preparing the Drishyam dashboard for the Honorable Finance Minister. श्री विपिन कुमार उपाध्याय। श्री विपिन कुमार उपाध्याय DRI बेंगलुरु में अपर निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। श्री उपाध्याय के द्वारा विकसित की गई आसूचनाओं के माध्यम से सोना, केसर, नारकोटिक ड्रग्स एवं वन्य जीवन सामग्री की तस्करी से जुड़े कई मामलों का पता लगाया गया। Shri V.B. Prabhakar. Shri V.B. Prabhakar, Director, Cabinet Secretariat, New Delhi, has served as an excellent investigator and was also instrumental in ensuring the handover of 40,000 seized antique coins to the Archaeological Survey of India. समर नंदा। श्री समर नंदा विश्लेषकी एवं जोखिम प्रबंधन निदेशालय नई दिल्ली में अपर निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। सीमा शुल्क में कार्य करते हुए श्री नंदा ने अवमूल्यन, गलत घोषणा एवं गलत वर्गीकरण से जुड़े कई बड़े मामलों का पता लगाया। Dr. A. Venkatesh Babu. Dr. A. Venkatesh Babu, Assistant Commissioner, Trichy Customs Preventive, has led a team to Arunachal Pradesh on a grueling 18-day operation for the survey and destruction of illicit opium grown over 1,150 acres with a potential street value of over 5,000 crores. श्री आनंद कुमार सवलम सीमा शुल्क चेन्नई में सहायक आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं। अपने कार्यकाल में श्री सवलम ने अधिसूचनाओं एवं विदेशी व्यापार समझौतों का गलत लाभ उठाने वाले कई बड़े मामलों का पता लगाया। Shri W.D. Chandrasekhar, Senior Intelligence Officer, DGGI Visakhapatnam, is an excellent officer whose dedicated efforts resulted in major seizures of foreign currency, red sanders, FICN and gold.
श्री अजित विश्राम सावंत थाने में अधीक्षक लेखा परीक्षा के रूप में कार्यरत हैं। श्री सावंत ने DRI, DGGI, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर जैसी संरचनाओं में कार्य करते हुए विभिन्न प्रकार के मामलों की खोज में सक्रिय योगदान दिया है। Srimati Nirmala Menon Kale, Additional Assistant Director, DGHRD, has made invaluable contributions to the successful run of the online system tracking of DPCs, maintenance of history of postings for over 4,000 IRS officers, and the creation of the mobile app for the civil list. श्री शरद कुमार त्रिपाठी CGST भोपाल में अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। अपने कुशल आसूचना नेटवर्क के माध्यम से आपने कई मामलों का पता लगाने एवं कर वसूली के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। Srimati L. Aparna, Superint, CGST Chennai, made significant contributions to the design of the EA 2000 audit, implementation of various modules of Sermon, ACES, and GST applications, as well as data analysis for unearthing commercial frauds and smuggling.